Hello everyone, Namaskar, welcome to Maths Guidance. Let's solve this question of probability. It's a question of probability and it's an easy question, you can say. Let's solve it. Let's first read it. A glass jar contains 6 white, 8 black, 4 red and 3 blue marbles. If a single marble is chosen at random from the jar, what is the probability that it is black or blue? Alright. So first of all, we will write the chapter's name. It is taken from the chapter probability. Okay. Probability. So this is a very easy question from the chapter probability. But since the questions asked in CGL is from the 9th and 10th level, so it's a question of importance, because probability, most of the students are fearful of this chapter probability. So I have chosen this question of probability, but it's a simple question if you understand probability. So first of all, let's understand what is probability. Probability is defined as, if I write, let us suppose this is an event. Okay, so event is written as E. Okay, so we write PE, that means probability. Probability is equal to number of outcomes favorable to the event. Number of outcomes favorable to the event. Favorable to E. Favorable to the event or E, divided by number of all possible outcomes of the experiment. Number of all possible outcomes. Alright, this is a definition of probability. All possible outcomes of the experiment. Alright, this is the definition of probability. We will solve our problem from this formula. Alright, this is the definition of probability. Now come to this question. This was the theory part. Now come to this question. The question is, a glass jar contains 6 white, 8 black, 4 red and 3 blue marbles. So first of all, we will write the number of all possible outcomes of the experiment. Okay, and let me tell you one more thing. Here we assume that all the outcomes are equally likely. Assuming all the outcomes are equally likely. This is part of the definition of probability, equally likely. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. इक्वली लाइकली का मतलब ये है कि जितना चांसेस, अगर हम हेड और टेल का लेके देखते हैं, जितना चांसेस, मतलब एक के आने का है, आइदर ये आएगा या तो वो आएगा, आइदर हेड आएगा या तो टेल आएगा. इक्वली लाइकली का मतलब यही है, आइदर दिस और दैट. ऑलराइट, तीसरा कोई कंडीशन नहीं हो सकता है. दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन इन ऑल दी डेफिनेशंस इक्वली लाइकली. अब हम करंट क्वेश्चन में आते हैं. इस क्वेश्चन में हमारा जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो कितना आता है हमारा. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. लेट अस फर्स्ट राइट इट. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये कितने हैं हमारे इस क्वेश्चन में पॉसिबल आउटकम्स. तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पॉसिबल आउटकम्स वो क्या हो जाएंगे, 6 वाइट, 8 ब्लैक, 4 रेड एंड 3 ब्लू, सबको ऐड कर देंगे. 6 + 8 + 4 + 3. क्यों? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होता है, जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सिंगल मार्बल को चूज किया गया है, तो जो पॉसिबल आउटकम्स है वो तो टोटल का ऐड ही होगा, जितने हमारे पास मार्बल्स हैं उतने. ऑलराइट, तो इसका ऐड करते हैं कितना होता है, ये 21 होगा. 6 + 8 14 + 4 18 + 3 21. ऑलराइट, सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 21. नाउ we have to draw the number of outcomes favorable to this particular event. So here the event is a single marble is chosen at random from the jar. What is the probability that it is black or blue? So the event is probability of black and blue. So first of all, let us first take black. All right, B for black. So the outcomes favorable to black is equal to how much? 8. We have 8 black marbles. Okay, also the outcome favorable to blue, this blue, let us take this BL, blue. Okay, that will be equal to how many blue marbles? 3 blue marbles. But the question is that it is black or blue.
मतलब ब्लैक भी चाहिए और ब्लू भी चाहिए, दोनों चाहिए, ब्लैक एंड ब्लू। दैट इन दिस केस वी विल ऐड दिस। सो इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दिस क्वेश्चन, नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज व्हाट आर द आउटकम्स, ब्लैक और ब्लू। ब्लैक भी चाहिए, ब्लू भी चाहिए, आइदर ब्लैक और ब्लू। तो इस केस में हमारा 8 + 3 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 11। ओके, अब इसी को हम फॉर्मूला में डाल देंगे, दैट पी ई इज इक्वल टू हाउ मच, 11 डिवाइड बाई 21। 11 इज द फेवरेबल आउटकम्स एंड 21 इज द टोटल possible outcomes. So 11/21 is our answer. 11/21 is in option number 2. Okay. So it's an easy question as I told you, but since this was a question from probability, that is why I choose to do this question, because I told you that most of the students, many students, not most of the students, many students are fearful of this chapter probability. So I hope आपको ये पसंद आया होगा। इन फ्यूचर अगर मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन और दिखता है प्रोबेबिलिटी का, या कोई भी क्वेश्चन दिखता है, तो मैं उसे ज़रूर करूँगा। आई विल सॉल्व इट फॉर यू। सो आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।